Assalamu alaikum students. I'm your principal course instructor, Miss Anika Saidzia from University of Education, Bank Road Campus, Lahore. Today we are going to start our lecture number 25 and the topic is Importance of Drawing for a Painting. So, this is an example of a live drawing. When we talk about the live drawing, first we should have the understanding of drawing. Drawing is the heart or the soul of an artist's way to express themselves as a communication tool. Drawing is a creative way to express the feelings and thoughts of an artist or designer. A drawing can be a sketch, a plan, a design, or graphic representation made with the help of pens, pencils, or crayons. So, जैसे किसी बिल्डिंग के लिए एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, इसी तरह से किसी भी पेंटिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको जो एक स्ट्रक्चर एक फेम फाउंडेशन चाहिए होती है वो एक ड्राइंग प्रोवाइड करती है. Surface for drawing. A drawing instrument releases a small amount of material onto a surface, leaving a visible mark. The most common surface for drawing is paper, although other materials such as cardboard, wood, plastic, leather, canvas and board may be used. So, किसी भी ड्राइंग के लिए सरफेस जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपकी सरफेस कैसी है, वो स्मूथ है, वो मैट है, वो ग्लेज्ड है. Different types of drawings. First there is live drawing, then there is illustration drawing, emotive drawing, analytical drawing, perspective drawing, diagrammatic drawing and geometric drawing. How drapery supports drawing. किसी भी ड्राइंग के अंदर जो एक ड्रेपरी है वो किस तरह से एक सपोर्टिंग एलिमेंट का जो है वो रोल प्ले करती है. Drawing of clothed people also results in fantastic artwork, of course. The folds of clothing are great things to draw in their own. Best of all, outside of live drawing, you are probably more likely to convince friends and family to model for you if they are allowed to keep their kit on. Live drawing does not necessarily refer to human beings. An essential part of the art is giving the viewer the feeling they are looking at a living, breathing creature complete with bones, blood, and emotion. That's certainly possible with animals. So, अगर आपने ग्रीक आर्ट को स्टडी किया हो तो आपको पता होगा कि ग्रीक सिविलाइजेशन में जो है ड्रेपरी हमें बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आती है, चाहे वो स्कल्पचर्स हैं, चाहे वो पेंटिंग है या रिलीफ है, तो हमें ड्रेपरी का यूज़ बहुत नज़र आता है उसके अंदर यूजेज. This is the study by Michelangelo. As you can see, how the human anatomy and the drapery are supporting each other. Types of live drawing. There are two types of live drawing: figure drawing and still life. Figurative drawing. A figure drawing is a drawing of the human form in any of its various shapes and postures using any of the drawing media. The degree of representation may range from highly detailed, anatomically correct renderings to loose and expressive sketches. A live drawing is a drawing of the human figure from observation of a live model. A figure drawing may be a composed work of art or a figure study done in preparation for a more finished work such as a painting. So, हमें जो है वो अर्लियर टाइम्स में भी नज़र आता है दैट इन स्पेशली द ओल्ड मास्टर्स जो थे माइकलैंजेलो, लियोनार्डो, राफेल, व्हाट दे यूज्ड टू डू, सबसे पहले जब भी वो कोई पेंटिंग को स्टार्ट करना होता था दे यूज्ड टू इंडिविजुअली स्टडी ईच फिगर और मॉडल सेपरेटली, और बाद में वो जो थे उन ड्राइंग्स को सेटिस्फेक्शन के बाद उनको कंबाइन करते थे फॉर द फाइनल आर्ट वर्क. सो ये प्रैक्टिस जो है उस टाइम पे बहुत कॉमन थी. और इवन कंटेम्प्रेरी टाइम में भी हमें बहुत से आर्टिस्ट मिलते हैं जो काफ़ी बहुत स्केचेस करते हैं बिफोर स्टार्टिंग अ फाइनल आर्ट वर्क और पेंटिंग. Study of Alba Madonna by Raphael. So here is another drawing, or we can say
preliminary sketch of a painting by Raphael. Still life is a drawing or painting that focuses on still objects. The subject matter is inanimate, which never moves, with a focus on household objects, flowers, or fruits. So, um, still life can also uh, can be studied in the drawing. Live drawing makes you understand shape and depth, light, shadow. You can create paintings that seem alive and full of character better than any photograph. The earliest known drawings of human figures were created as part of the prehistoric tradition of cave painting from about 17,000 BCE onwards in France and Australia. In France, the earliest drawings of a man, a prawn steak like figure, can be seen in the shaft of the dead man at Lascaux cave in the Dordogne. So, as you can see, these are the drawings which we got from the prehistoric times. Now we will see the drawings in the Italian Renaissance, which was the golden age of drawing. The three artists in particular that made drawing or design respectable, Michelangelo, Leonardo, and Raphael, since up to then it had been regarded as merely preparatory design work rather than an independent form of fine art. Leopold de Medici and Giorgio Vasari both amassed a great collection of sketches. सो अगर हम रेनेसांस में देखें तो एट दैट टाइम जस्ट फॉर द स्टडी फॉर द सेक ऑफ स्टडी फॉर द सेक ऑफ विजुअल सेटिस्फेक्शन जो था आर्टिस्ट अपने ये स्केचेस बिल्टअप करते थे अपनी पेंटिंग को बनाने से पहले एट दैट टाइम ड्राइंग को इंडिविजुअली एक एन आर्ट वर्क की जो है एज एन आर्ट वर्क जो है उसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता था जैसे कि आज के टाइम में हम पेंटिंग को एक अलग से इसको रिकग्नाइज करते हैं उसकी एक अलग से वर्थ है और जो ड्राइंग है उसको हम एक अलग से मीडियम एज अ सेपरेट आर्ट वर्क उसको कंसिडर करते हैं बट एट दैट टाइम एट द टाइम ऑफ रेनेसांस ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि आप ड्राइंग को एक एज अ सेपरेट आर्ट वर्क जो है वो कंसिडर करें they were just taken as you can say the preliminary sketches of some huge scale paintings or they were just done as a satisfactory for the sake of satisfaction. So, Leonardo was a master of topographic human anatomy, executing a large number of detailed sketches of muscles, tendons, and other anatomical features. So, Leonardo da Vinci जो था उसका ज़्यादातर फोकस मसल्स और ह्यूमन एनाटमी में था बिकॉज ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन मैकेनिज्म अब चाहे वो ह्यूमन बॉडी का है चाहे वो मशीनरी है ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द mechanism and the parts and the elements of body tendons and anatomical features as you can see he used to study each and every muscle of the human body जैसे कि हमें एक मेडिकल स्टडी में हमें नज़र आता है ईच मसल और वेन और एक डेप्थ नज़र आती है एक कंप्लीट स्टडी नज़र आती है इंट्रिकेट डिटेल्स के साथ तो कुछ वैसा ही जो है लियोनार्डो का भी इंटरेस्ट था टू कैप्चर ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी एज एविडेंट इन दिस ड्राइंग you can see muscles and bones side by side head of a girl executed with silver point on light brown paper again a drawing by Leonardo. Now we will see the work of Michelangelo. Michelangelo too was a prolific draftsman, sketcher, and exponent of figurative art. After the death of Raphael, he dominated Renaissance art for another 40 years. His primary interest was the male nude. So basically, he painted a lot of nude males in his drawings and also in his sculptures because he was the artist at that time who explored both mediums
painting and sculpture as well. The Sistine Chapel ceiling. Now these are the works of Raphael. Here you can see this is all about the postures and different gestures of human body. If they are studying portrait, it is not just static, it is full of expressions and it's expressing some kind of special mood. Drawing media used by Renaissance artists. Here are just a very few examples of the media used in Renaissance drawings and sketches in order to obtain precise effects. Metal point and brown wash over black chalk, heightened with white on salmon pink paper. Metal point heightened with white gouache on lilac grey paper. सो ज़्यादा हमें वेरिएशन नज़र नहीं आती है कलर्स की, जस्ट एक लिमिटेड जो हमें टोन्स हैं वो नज़र आती हैं. और ब्रश एंड ब्राउन वॉश विद इंक, traces of red wash on parchment, pen and brown wash heightened with white over traces of black chalk. तो ज़्यादातर हमें एक मोनोक्रोमेटिक जो है वो इफ़ेक्ट नज़र आता है, अब चाहे वो वॉशेस में है, ब्राउन्स में है, या रेड की टोन्स हैं, लाइट टोन्स ऑफ पीचेस एंड पिंक्स एंड द यूज़ ऑफ सिल्वर एंड चारकोल ओवर इट. तो हमें ये वो कॉम्बिनेशन एक नज़र आता है इन ओल्ड मास्टर्स के स्केचेस में. सो दैट्स इट. थैंक यू.